Hello friends, welcome back, and this is Santosh sir, and I hope you are doing well in the examination, right? And this video is on MCO 05, and the exam is coming day after tomorrow. So, we'll be discussing about few important questions on MCO 05. As we know that MCO 05 में न्यूमेरिकल्स है, एंड इस चैप्टर पे ऑलरेडी मेरे 4-5 वीडियोज़ हैं पहले प्रीवियस वीडियोज़, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक MCO 05 पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल पे, तो आप उसको ज़रूर देखें. एंड आई थिंक दैट इज़ 100% फॉर योर प्रिपरेशन. ठीक है, अगेन थोड़ा सा और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको रिवाइज करने हैं. फर्स्ट, व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिस्क्राइब इट्स यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस. इसको भी मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, एक बार वापस देख लेते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड पोजीशंस इन अ फर्म, राइट? एंड दे आर बेसिकली 4 types, like balance sheet which shows the financial position of the company, trading and profit and loss account which shows the income statement of a company, cash flow statement, statement of equity. Now इनके बारे में थोड़ा बहुत आप जानते भी हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं, तो इनको एक्सपैंड करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ देख लेते हैं इसकी सिग्निफिकेंस टू वेरियस यूजर्स. नाउ ओनर्स एंड स्टेक होल्डर्स need financial statements to take important decisions. Employees need financial statements to make collective bargaining on their salaries, wages, compensation and all that. Investors, they need statements to find whether the financial position of the company is good enough for investment. And banks and other financial institutions, they need it to find the credit worthiness of the company and whether they can give further debts, loans to the company. So let's move on to the next important question, and this is on budgetary control. In almost every exam you get question on this. It is such an important question. What is budgetary control? And इसके बारे में मैंने जितना हो सकता है यहाँ पे लिखा हुआ है. It is a system or a tool which uses budgets to control the economic activities of a firm. Simple definition, right? And dictionary definition भी देख लेते हैं. A budget is a means and budgetary control is the end result. Budget एक means है and budgetary control is the end result. इसमें बहुत simple है. Simply we can say that it is a system of achieving performance on the basis of budgets, right? And let's see the steps in budgetary control. There are basically 3 steps जो मैंने यहाँ पे फ्लो डायग्राम में आपको बताया हुआ है. फर्स्ट, टू प्रिपेयर बजट्स. सेकंड, टू कंपेयर द बजट विद द एक्चुअल्स. ओके, बेसिकली बजट का मेन ऑब्जेक्ट यही होता है. एंड देन इफ देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन the budgets and the actuals, you have to take corrective actions, right? Let's see the advantages and limitations of budgetary control. Advantages, it helps in planning. Very simple, इसको describe कर सकते हैं. It helps to measure the performance of the employees, right? It controls cost, it eliminates all the wastages and all that, and it helps in better coordination of workers, machines, management and all that, and overall it will help to maximize profits. And let's see the limitations of budgetary control. It is bit expensive, because you have to appoint a few specialist persons to do budgetary control. It is time consuming. Then there is also every chance of getting wrong estimates, so they are not 100% results, and they also need revision of the past performances. Okay, fine. So let's move on to the next question, and this is the question. This is again a very important one, and the question is on break even analysis. ये डायग्राम बनाया है यहाँ पे मैंने. On the y axis revenue, इसको revenue बोलते हैं, and on the x axis plot the units sold. ठीक है, and as you can see there are 2 curves here, and this area is loss area and this area is profit area, and this middle point is called BEP, break even point. And one thing more,
that this part, जो लॉस का जो पार्ट है दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट होता है और इसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट. नाउ देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आप इसको लिख सकते हैं. हाउ यू कैन डिफाइन दिस. ब्रेक इवन एनालिसिस इज अ सिचुएशन वेयर ए फर्म इज नेदर मेकिंग एनी प्रॉफिट्स नॉर लॉसेस. वेरी सिंपल, बट इट कवर्स ऑल द कॉस्ट्स इन्वॉल्व्ड. एंड हियर टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल सेल्स रेवेन्यू. ये हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं इसके बारे में. ओके, नाउ इट इज अ स्टेज एट विच अ firm can determine whether a product or service is profitable or not, whether it should sell it in the market or not. Okay, it studies the relationship between fixed cost, variable cost and revenue. So that's very clear. And a company having less fixed cost will have a low BEP. ये फिक्स्ड कॉस्ट जितना कम होगा आपका BEP पॉइंट उतना नीचे चले आएगा. ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट जितने ज़्यादा होंगे दिस पॉइंट विल मूव अपवर्ड. Right, and let's see the formula. This formula is very important. Fixed cost divided by contribution per unit. इस वीडियो के बाद में मैं आपको न्यूमेरिकल्स के वीडियोस भी दूंगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के, तो वहाँ पे हम लोग इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे सम न्यूमेरिकल्स. ओके, लेट्स सी द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस. इट इज़ क्वाइट यूजफुल फॉर न्यू बिजनेस व्हेन यू आर स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर. It is very important that you should carry out a break-even analysis of the product and service. Then when the firm is producing or trying to launch a new product or service, then again it is very important when the line of business of the firm is changing. For example, एक कंपनी है जो गारमेंट्स बनाती है, अगर वो मेडिसिन में जंप करना चाहती है, अपनी लाइन शिफ्ट करना चाहती है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर दिस. Then it is useful to make comparisons. That's very clear. Then it helps in decision making and it helps to determine the selling price of a product which gives the desired profit. ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि यहाँ से हम लोग जो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है या जो डिज़ायर्ड सेलिंग प्राइस है, रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस है, वो हम लोग यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं. एंड नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू गेन द डिज़ायर्ड प्रॉफिट्स. दिस पॉइंट इज ऑल्सो रिलेटेड विद दिस एंड इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द कॉस्ट and revenue at different levels of production. Okay, let's move on to its assumptions कि यहाँ पे break even analysis में क्या क्या चीज़ें assume की जाती है. Cost can be divided into various types like fixed cost and variable cost. Fixed cost remain constant, it doesn't change during the level of production. Then variable cost, it changes with the volume of output. That's simple. And selling price remains constant, it doesn't change, and efficiency of the workers doesn't change, it remains the same. Okay, so let's move on to the next question. Okay, not the next question, the same question but limitations. Now what are the limitations or disadvantages of break-even analysis? Not possible to divide the cost into fixed and variable. Actually it is not visible. It's quite difficult. Okay, selling price frequently changes and generally selling price depends on the market demand and supply of a commodity or service. तो ये भी फिक्स नहीं होती. It assumes that production and sales quantities are equal, but it is not true practically. Right? Then it doesn't consider the amount of capital employed or capital to be employed in the business. So it has ignored the capital. ओके फाइन फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं, मतलब प्रीवियस वीडियोस में है, तो इसको हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, इसको करेंगे. व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम बजटिंग, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. लेट्स सी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग इन विच एक्चुअल कॉस्ट आर कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट. And the purpose is to control cost and promote efficiency. The various types of standards are used such as standard, ideal standard, attainable standard. Okay, these are general standard and this is ideal standard which is to be used and the attainable. Standard costing involves setting up of predetermined cost estimates in order to provide a basis for comparison with actual costs. So that is also clear. The standard cost is a planned cost
for a unit of product or service. So, you can write these points if you are getting a question from here. Okay, friends, let's move on to the next question. This is standard costing and budgeting difference. Now, standard costing is applicable to manufacturing companies only, but budgeting, it is applicable to all types of organizations. And standard costing, the main object is to control cost, whereas budgeting, it is a planning tool, and it emphasizes, it gives very less importance to controlling factors. Then it's a narrow concept, it's a broad concept. Okay, fine. Now let's move on to the advantages of standard costing. It helps in comparing cost, the previous cost, the present cost, and controls the wastages and inefficiency of the workers or resources. It helps to improve the production methods, technology. It helps to price the product. It helps to find the price of a product or service. Then it helps in planning and budgeting, and it helps the management by exception. And lastly, optimum use of resources. So you can just expand, you can write 3-4 sentences about these points. Okay, let's move on to the next question. And this is, what is performance budgeting, and state its objectives. Let's see, I've written a few key sentences on this. It is a process of using information about the performance and results of programs in the processes of budgeting and resource allocation. Right? This is the definition. Okay. It is a practice of developing budgets based on the relationship between programs funding levels and expected results. तो बेसिकली मोर और लेस सारी चीज़ें एक ही चीज़ को जाती है, एंड दैट इज़ बजट. ओके, पहले आपने क्या किया और अभी आप क्या करने वाले हो और आपने क्या अचीव किया है. तो बेसिकली ये 3 फैक्टर को कंसिडरेशन पे हम लोग करते हैं. Then it establishes responsibility center where the manager, it is headed by the manager who is responsible for that. Then targets are to be like what type of targets, how much target is to be achieved, तो उनको set करना, and how much finance is required to complete the project or target. Then comparison of the actuals with the budgeted, and then you have to report to the top level management and take actions. Now friends, ये तो हो गए कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चंस एंड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस वीडियोस में इनके आंसर्स हैं. ये क्वेश्चंस भी बार बार एग्जाम में स्ट्राइक किए हुए हैं, तो आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. एंड आई थिंक कि वो वीडियोस वगैरह देखने के बाद में आपको बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी. ठीक है, ओके. तो ये सब क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान देना है आपको. मैं बता देता हूँ. लाइक व्हाट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इट्स फीचर्स, यूजेस, प्रीवियस वीडियो में है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, ये मेरे फर्स्ट वीडियो MCO 05 पे जो वीडियो है उसमें मैंने इसको डिस्कशन किया हुआ है. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट उसके सेकंड वीडियो में है. देन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये मैंने इस वीडियो के पहले जो रिसेंटली अपलोड किया था उसमें मिल जाएगा. देन रोल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट. नाउ फ्रेंड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑलरेडी मेरे 4 वीडियोज़ हैं, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. ये क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है MCO 05 का, तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है. आइदर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएगा, अदरवाइज थ्योरी आएगी. तो थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों का कॉन्सेप्ट आपको मेरे वीडियोस से क्लियर हो जाएंगे. ओके. देन जीरो बेस्ड बजटिंग, इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस. एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये शॉर्ट नोट्स में स्ट्राइक कर सकते हैं फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. एंड लाइक क्विकली मैं आपको न्यूमेरिकल्स के भी वीडियो शेयर करता हूँ. एंड फ्रेंड्स, वन थिंग मोर, those viewers who want to buy these genuine notes, so they can message me, they can join my Telegram channel because my notes are bit chargeable. ठीक है. So friends, that's all in this video, and stay blessed. Best of luck. Thanks for watching.